E-ration card service in India. Which of the following state started e-ration card service for the first time? तो ये दिल्ली. In March 2015, Delhi became first state UT in India to launch the e-ration card service. E-ration card service enabled beneficiaries to download ration cards online. ठीक. Improved transparency and ease of access in the public distribution system, benefited 2.5 million ration card holders initially. ठीक. Gujarat and Maharashtra implemented digital PDS reforms, but not the first. ठीक. Uttar Pradesh also advanced in PDS digitization, but later than Delhi. Delhi was first to implement e-ration card services. Food Safety and Standard Act 2006. Consider the following statement. Food Safety and Standard Act 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954. हाँ सही है. फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नहीं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA 2006 was a comprehensive legislation that repealed multiple food safety laws, including Prevention of Food Adulteration Act 1954, Fruit Products Order 1955, Meat Food Products Order 1973, Vegetable Oil Products Control Order 1947. ठीक. FSSAI is under Ministry of Health and Family Welfare, but it is not under the charge of Director General of Health Services. ठीक है. Chairperson of FSSAI is independent appointee by the Government of India with rank of Secretary to the Government of India. FSSAI is responsible for regulating food safety standards, ensuring safe food practices, licensing and registration of food businesses. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स सही है. नेशनल फूड सिक्योरिटी. हाँ. डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सही है. स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट का क्या ही काम. पॉपुलराइजिंग न्यूली रिलीज्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप सही है. ये कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2007 में ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान. क्या ऑब्जेक्टिव? इनहेंस प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेज एंड कोर्स सीरियल्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट. इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल practices. ठीक. की कंपोनेंट्स ऑफ NFSM. Distribution of high yielding variety seeds improves productivity. Demonstrated of improved production technology, provide field demonstration to educate farmers. Popularizing newly released varieties of crops, promote advanced crop varieties to enhance yield and quality. Strengthening credit facilities, not a direct objective of NFSM. Credit support falls under schemes like Kisan Credit Card and NABARD initiative, not NFSM. Crops not covered under National Food Security Mission. Which of the following crops is not covered under National Food Security Mission? तो कोर्स सीरियल्स, पल्सेस है, राइसेस है, व्हीट है. ठीक. इनिशियल फेज ऑफ NFSM वाज लॉन्च सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लेकिन 2015 में क्या हुआ ये? अच्छा. ठीक. एनुअल प्रोडक्शन राइस 10 million ton, wheat 8 million ton, pulses 2 million ton. Target was to achieve 20 million tons of additional food grains by the end of 11th 5-year plan 2011-12. During this period, coarse cereal were not included under NFSM. ठीक. From 2014-15 onwards, coarse cereals like maize and barley were included in NFSM ambit under 12th 5-year plan. NFSM expanded to 8 components. कौन कौन से? राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, सीड विलेज प्रोग्राम एंड मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स. सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स. ठीक. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन.
लॉन्च ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 में, ठीक, राबी सीजन में 2007-8 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन was launched in October 2007 and its implementation began from the Rabi season of 2007-8. ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस, अचीव 20 million ton of additional food grains by the end of 11th 5-year plan. Component initially included rice, wheat and pulses, later expanded to coarse cereal and commercial crops. ठीक. Commodities under National Food Security Mission. National Food Security Mission was launched to increase the production of which commodities? Wheat, rice, pulses, all of these. ठीक, लेकिन अभी क्या है? आठ टाइप के वो हैं. राइस का क्या टारगेट है? वो था इंक्रीज था 10 million टन, वीट का 8 million टन, पल्सेस का 2 million टन. ठीक. अब फिर एक्सपेंड फेसेस में क्या हुआ? 12th 5-year प्लान 2014-15 में इंक्लूडेड कोर्स सीरियल्स, मेज और बार्ली, एडेड कमर्शियल क्रॉप्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन. ठीक. अभी क्या है? राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल, कमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड, ऑयल पाम, सीड विलेज प्रोग्राम. ठीक. अब देखते हैं क्रॉप्स कवर्ड अंडर NFSM. सब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट कवर्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन? व्हीट, राइस, बाजरा, राइस, शुगर केन, मेज, सब तो हैं लगभग. ये लगभग सब हैं, ये सारे हैं. अब मतलब अभी के सिनेरियो में ये सारे हैं. इनिशियली कवरेज व्हीट, राइस, पल्सेस. ठीक. लेकिन फिर 12th 5-year प्लान एक्सपेंशन में क्या हुआ? कोर्स सीरियल, मेज और बार्ली. ठीक. कॉमर्शियल क्रॉप, कॉटन, जूट, शुगर केन, ये सब भी ऐड कर लिए गए. क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन NFSM, ये तब की बात है. तो ऑयल सीड नहीं इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब कर लिया गया है. ऑयल सीड वर लेटर इंक्लूडेड नेशनल मिशन ऑन सॉइल सीड एंड ऑयल पाम which merged with NFSM in 2018-19. Price increases in PDS food grains. The reason for the increase in price of food grains distributed through public distribution system is to lessen the burden of subsidy involved in the scheme. PDS provided subsidized food grains to poor households. Government procures food grains at minimum support price and sells at subsidized rates. Difference between MSP and subsidized price is borne by the government as the subsidy. Reducing subsidy burden by raising PDS prices, government reduces the subsidy component, which helps in fiscal management. Not for profit. The PDS is a welfare measure, not for profit-making venture. Consumption control. PDS is not intended to control consumption but to ensure food security. PDS does not directly influence farm remunerative prices. Not a consumption control tool but a food security initiative. Correct. The primary reason is to reduce subsidy burden. Government does not aim to profit from PDS operations. अब देखते हैं ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन. ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1970 बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा. इट इज़ नोन एज वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. की आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. ठीक. मिल्क प्रोडक्शन रैंकिंग में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है. लीड्स फॉलोड बाय राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये किसका स्कीम लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अंडर नंद बाबा मिशन. ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव मिल्च काउ ब्रीड्स जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगोत्री. ठीक. इनहेंस मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी फार्मर्स इनकम. ठीक. Correct. Include only specific milk cow breeds as it does not align with eligibility criteria. Matching animal with its breed. अब यहाँ हम लोग को देखा जाए. नॉट करेक्टली. थर्प अगर गाय की वो है मिल्क काउ. बफेलो भदवारी ठीक है. काउ सिंधी ठीक है.
गोट जमुना पारी ठीक है। सीप थकर थकर थरकर पारी नहीं है, ये गाय है। भटवारी बफेलो origin उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, स्पेशली अराउंड आगरा एंड इटावा, known for high fat content in milk 6 to 8%. Sindhi, also known as red Sindhi, originated from Sindh province of Pakistan, found in Punjab, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Odisha, known for high milk yield and heat tolerance. Sindhi. Jamuna Pari, goat indigenous in Uttar Pradesh, named after Yamuna river, famous for meat production and high milk yield. Tharpakar cow, not sheep, found in Gujarat and Rajasthan, not a sheep breed but a cattle breed, known for dual purpose utility, milk and drought resistance. Marine Products Exports Development Authority, with reference to the Marine Product Export Development Authority, MPED was established in 1972. It is headquartered in Kolkata, नहीं कोलकाता में नहीं है, कोच्चि केरला में है. Established 24th August 1972 under Marine Product Export Development Authority 1972. Purpose: promote the marine product industry with a focus on export. 1972 में हो गया. Oversee quality standard processing and export of marine products. Located in Kochi, Kerala, not Kolkata. India's marine export value लगभग $8.9 billion का है. Major market USA, China, European Union, Japan and Southeast Asia. Important fish industry in India. The most important fish industry in India at natural inland. Inland fisheries include rivers, floodplains, lakes, reservoirs, ponds and tanks. Major contributor to India's fish production, especially through aquaculture. Marine fisheries operate along the coastline and deep sea fishing. Contribute less than inland fisheries to overall fish production. Marine production 44.32 lakh tons. Inland production 131.13 lakh tons. Total fish production 175.45 lakh tons. Deep water and sea coast are part of marine fisheries, which are second. Deep water and sea coast. डीप वाटर सी कोस्ट, ये जो है मतलब वो है marine fisheries, which are secondary to inland fishery. Cultural inland refers to aquaculture, but natural inland is broader and correct choice. Natural inland dominate India's fish industry. Largest producer of fish in the world, China. Largest producer of fish globally, including both capture fisheries and aquaculture. China shares 36% global aquatic animal production. India shares 8%, ranked second. Indonesia 7%, third. Since 2002, China has been largest exporter of fish and product. The leading position is due to large-scale aquaculture, coastal fishing, and advanced processing techniques. Japan, Russia, and USA are significant producers but are not the largest. Blue revolution किसके लिए? Fish के लिए. Refers to rapid revolution of fish production, pisciculture, initiated through National Fisheries Development Board, established in 2006, aimed to enhance fish production, aquaculture development and sustainability of fisheries. Expansion of aquaculture, freshwater, brackish water and mariculture. Infrastructure development, hatcheries, fish feed production and cold storage. Skill development, training fishermen, stakeholders and modern techniques. Green revolution, food grains, wheat and rice. White revolution, milk production, operation flood. Yellow revolution, oilseed production. ठीक. Blue revolution in India, pisciculture. Refers to enhancement of fish production in India, especially
through pisciculture fish farming, initiated under National Fisheries Development Board in 2006. Boost fish production and productivity, develop infrastructure and fisheries and aquaculture. India is the second largest producer of fish globally, 8% of global production. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana launched in 2020 with an investment of 20,550 crore. Target 22 million metric tons of feed production by 2024-25. Horticulture related to golden revolution. Floriculture part of horticulture but not related to blue. Pisciculture fish farming focus on blue revolution. Sericulture golden या silver revolution. Black revolution is related to crude oil production. Refers to increase in crude oil production. The term black gold is often used for crude oil due to economic value. Objective to reduce dependency on oil imports by boosting domestic production. India's crude oil production, annual production approximately 29.8 million metric tons. Key companies ONGC, Oil India Limited and private players. Government initiative. New exploration licensing policy. Discovered small fields DSF policy. National Biofuel Policy 2023 aiming 20% ethanol blending by 25 to 26. Fish production related to blue revolution. Coal production black diamond. Crude oil production focus on black revolution. Mustard येलो रेवोल्यूशन किससे ऑयल सीड से रिलेटेड है. रिफर टू इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोडक्शन स्पेशली मस्टर्ड सनफ्लावर सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. कब लॉन्च किया गया था 1986 में. द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ऑब्जेक्टिव क्या था. अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल्स, रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. अचीवमेंट इंडियाज ऑयल सीड प्रोडक्शन 2023-24 36.6 million tons, down from 41.36 million tons in 2022-23. Key oil seed mustard, soybean, groundnut, sesame and sunflower. Food grains related to green revolution, fish related to blue revolution. Correct oil seed production is the focus of yellow revolution. Milk related to white revolution. ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है. फर्टिलाइजर्स से. पिंक रेवोल्यूशन ओनियन से. प्रॉन और सी फूड से भी संबंधित है. सिल्वर रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ एग्स. रेड रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से. रेड रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स. ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स प्राइमरली व्हीट एंड राइस. गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन. ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ एंड लेटर प्रोडक्शन. अच्छा यहाँ हम लोगों को मैच करना है. गोल्डन रेवोल्यूशन किसका. अब देखिए ग्रे. पहले तो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोल. येलो ऑयल सीड. ग्रे गोल्डन का हॉर्टिकल्चर और ग्रे का फर्टिलाइजर. फोकस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड गोल्डन रेवोल्यूशन हनी और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट लेड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड. ठीक. ग्रे इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर especially chemical fertilizer. Yellow targeted oil seed production especially mustard and rapeseed. Black aim to increasing crude oil production domestically. ठीक है. Father of green revolution in word नॉर्मल ई बोरलॉग. इनको शायद भरत भूषण या भरत भूषण से नवाजा गया. इन अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट रिगार्डेड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन Norman E. Borlaug. Developed high yielding disease resistant white wheat varieties implemented in Mexico, India and Pakistan, leading to food security. Awarded with Nobel Peace Prize 1970 for combating world
for combating world hunger. M.S. Swaminathan, known as father of Green Revolution in India, introduced high-yielding varieties of wheat and rice in 1966-7, transforming India into a food surplus nation. ओरिजिन ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से? पंतनगर से। ठीक, पंतनगर यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, pioneering institution, played a crucial role in introducing high-yielding varieties. Key milestone 1966 to 67, first trial of Mexican wheat varieties under M.S. Swaminathan leadership enabled self-sufficiency in wheat production, marked the beginning of India's green revolution, particularly in Punjab, Haryana and Western UP. Bengaluru, known for agricultural research. Kanpur, Indian Institute of Pulses Research. Delhi, ICAR. पर्सन नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन नहीं थे? तो रफ़ी अहमद किदवई, ये एसोसिएटेड नहीं थे। ठीक, एम एस स्वामीनाथन, साइंटिफिक लीडर, प्रोमोटेड हाई यील्डिंग वैरायटीज, इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग नॉर्मन बॉलक्स व्हीट वैरायटीज टू इंडिया। सी सुब्रमण्यम, उस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1960, लॉन्च्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। Indira Gandhi, Prime Minister during Green Revolution, supported policy changes and subsidies for fertilizer and seeds. ठीक, रफ़ी अहमद किदवई, known for his work in Union Minister in Communication and Agriculture, but during pre-Green era 1952 to 54. ओके, उस समय कौन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे, साइंटिस्ट। सी सुब्रमण्यम, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। Nature of Green Revolution in late 1960. Which of the following is most appropriate desired? Describe the nature of Green Revolution in late 60th and 20th century. Yes, seed fertilizer water technology. Seed fertilizer water technology. The core strategy of Green Revolution included high yielding varieties of wheat and rice, chemical fertilizers and pesticide, irrigation facilities, particularly tube wells and canals. आउटकम क्या हुआ? बूस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, particularly in food grains. India transitioned from a food deficit to food surplus nation. ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट अबाउट वेजिटेबल्स, ये राइस और वीट को लेकर था। IADP वाज ए प्रोकर्सर बट नॉट द प्राइमरी अप्रोच। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सी सुब्रमण्यम जी ने इसे चालू किया था। HVYV प्रोग्राम वाज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर टेक्नोलॉजी पैकेज। ठीक, रीजन्स वाई सेल्फ सफिशियंसी इन फूड वाज नॉट फुली अचीव्ड डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पॉकेट्स ऑफ द कंट्री। हाँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक ही सीमित रह गए। द कॉस्ट ऑफ फूड इज़ टू हाई प्रिपेयर टू द अर्निंग ऑफ पुअर, सही। टू मच एम्फेसिस ऑन व्हीट एंड पैडी कंपेयर टू कोर्स ग्रेन, सही। गेन्स अक्वर्ड मोर टू कैश क्रॉप्स दैट फूड क्रॉप्स, ये नहीं है। लिमिटेड रीजनल इम्पैक्ट, बेनिफिटेड मेनली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। हाई इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज इनकम डिस्पैरिटी एंड स्मॉल फार्मर्स स्ट्रगल। Crop bias, focus on wheat and rice, neglecting coarse grains and millets. Inequitable gains did not favor cash crops over food crops. ठीक है। स्टेट बेनिफिट्स मोर फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन किसने? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन सुटेबल फॉर व्हीट एंड राइस कल्टिवेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। High adaptation technologies utilizes HYVs, chemical fertilizer and modern irrigation techniques. Impact, transferred Punjab into granary of India. Increase in productivity and rural prosperity. Second Green Revolution क्या? The second Green Revolution proposed by Prime Minister does not include Second Green Revolution. Proposed by Prime Minister does not include FDI.
encourage foreign helping Indian farmers to participate in global agricultural trade, minimize post harvest wastage, improve storage of crops. लेकिन इंकरेज FDI इन एग्रीकल्चर ये नहीं होता. सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन aimed at doubling farmer income, improving agricultural practices and focusing on eastern Indian states, Bihar, West Bengal and Odisha state. ठीक है, डबलिंग फार्मर इनकम, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड फोकसिंग ऑन ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स. Emphasized efficient water use through per drop more crop under PMKSY. Post harvest management to reduce wastages. Storage infrastructure development to minimize losses. Global agricultural trade participation by improving quality standards. Why FDI not included? Government policies have been cautions in allowing FDI in agricultural focuses instead on infrastructure like cold chains and food processing. Under 100% FDI in marketing of food product produced in India, announced in 2016. Eco-friendly agricultural practices. Organic farming. Organic farming involves natural inputs such as compost, manure and biofertilizers. Avoid synthetic chemicals. Promote crop rotation, polyculture and natural pest management. Benefit soil health improvement through natural fertilizer. Water conservation by reducing chemical runoff. Support biodiversity and sustainable agriculture. High yielding varieties often associated with chemical fertilizer, pesticide, which may harm the environment. Glass houses require high energy inputs and artificial environment. Less eco-friendly. Shifting cultivation leads to deforestation, soil erosion and loss of biodiversity. Soil health card scheme. Nationwide soil health card scheme aims at checking the overuse of fertilizers in farmlands. ठीक है. Launched 19th February 2015 at Suratgarh, Rajasthan by PM Narendra Modi. Soil health card. ठीक. SSS soil quality and nutrient status, provide recommendation on fertilizers and soil amendments, promote judicious use of fertilizer, reducing chemical overuse. Over 12 crore soil health card issued in 2024, leading to improved productivity, lower input cost. ठीक. Initiative to nutritional security through millet promotion. With reference to initiative for nutritional security through intensive millets promotion, which of the following statements are correct? 1 and 2. The initiative aims to demonstrate improved production and post-harvest technologies and demonstrate value addition techniques in an integrated manner with a cluster approach. Poor, small, marginal and tribal farmers have a larger stake in this scheme. सही है. The scheme encourages farmers to commercial crop to shift to millet cultivation by offering free kits of nutrients and micro irrigation equipment. नहीं, ये कब लॉन्च किया गया था? Launched in 2011-12 under राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. Aims boost millet production, especially nutri cereals. Technology demonstration and improved practices and post-harvest management. Focus on value addition through processing and पैकेजिंग. टारगेट बेनिफिशियरीज पुअर, स्मॉल, मार्जिनल, ट्राइबल फार्मर्स. ठीक. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि इट इंक्लूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज. स्टेटमेंट 2 एम्फेसिस ऑन ट्राइबल एंड मार्जिनल फार्मर एज दे ट्रेडिशनली ग्रो मिलेट्स. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट. द स्कीम डज नॉट incentivize commercial crop farmer to shift to millet through free grids. Relevance of millets in 2024. International Year of Millet 2023 declared by UNGA boosted India's millet production and exports. Policy push promotion of millets as nutritious alternatives, enhancing food security and climate resilience. ठीक, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है. थैंक यू, बाय बाय.